पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या. Hello, good evening, and welcome to a new episode of Arguably the Reading Quest. I am Nishant. So, this is the fourth episode of the World Poetry series, and in this series, I am going to discuss none other than the paradigmatic, the iconic, the rebellious Mirza Ghalib. So, first thing first, this is published at Raj Kamal Prakashan and it is edited by Ali Sardar Zafri. So, if you are ever looking for Diwane Ghalib, it should be of Ali Sardar Zafri's edition. So, that is the first thing. Now, there are many things, that we can talk about Ghalib, and whatever you say on Ghalib can never be hyperbole. It will always remain an understatement. But during the 80s, I believe, one person that took Ghalib to every household of North India was none other than Gulzar's Mirza Ghalib serial, starring Nasruddin Shah. And, the ghazals were sung by the iconic Jagjit Singh. So it was Gulzar's Mirza Ghalib starring Nasruddin Shah, and the ghazals were sung by Jagjit Singh. So to start with, this is how Gulzar describes the Mohalla of Ghalib. The Mohalla is Balli Mara. So Gulzar says, बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ. बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ. Those circuitous arguments like alleys. पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ, circuitous arguments. सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाह. चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोशीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज़ और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी भी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले. इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है. And then Gulzar's Mirza Ghalib serial started. So, insofar as my acquaintance with Ghalib is concerned, so I was a listener of Ghalib first rather than a reader. And my listening to Mirza Ghalib started with none other than Jagjit Singh's iconic rendition in the serials of Gulzar. And then later on I started reading Mirza Ghalib. So I was a listener first and then a reader, and that is how Urdu poetry is to be approached. Now, one more book that I would like to suggest and I would like to quote is Azaz Ahmad's Mirza Ghalib, published at the Oxford India paperback, Oxford University Press. So the introduction is written by Azaz Ahmad, and of course you may ask me that why I have brought this book, because I already have Diwane Ghalib by Ali Sardar Zafri. But this book was particularly important for me because I wanted to, see the English renditions of Mirza Ghalib and how it is translated, and I would, was particularly interested in comparing the English versions with the originals, and that is why I brought this book. And this book was also important for me in order to, read the Azaz Ahmad's introduction to Mirza Ghalib, which was very important for me. So it starts with, and I'll just quote in bits and pieces, the 7 decades of Ghalib's life were not a very auspicious time for writing of poetry for anyone who lived in the city of Delhi. The British conquest of India was completed during those decades. The fabric of the entire civilization came loose, and the city of Delhi became a major focal point for countless traumatic crises. Ghalib was not, in the modern sense, a political poet. Not political, in other words, a sense of commitment to strategies of resistance. Yet surrounded by constant carnage, Ghalib wrote a poetry primarily of losses and consequent grief. A poetry also of what was, what could have been possible, but was no longer. So, Mirza Ghalib was a poet of, mysticism on one hand, of contemplation of losses,
of questioning the world as it is on the other hand. So he was not a poet of mysticism. He was a poet of contemplation. He was a poet of grief. He was a poet that gave various nuances and shades to the idea of love itself. For me, particularly, if you ask me what I like the most about Ghalib, and it is very recent fascination that I, stumbled upon the fact that there are certain words that were Ghalib's favorite. Words such as Naseh, Wali, Hazrat, Fakir, Khuda. So I have compiled a list of all these, 7 to 8 couplets, sher, which I believe will interest you. So these were the words that were were the words that Ghalib himself was fascinated with. Pardon. ये मिसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता. ये मिसाइले तसव्वुफ, which can be translated as these philosophical dilemmas, these religious paradoxes. Drinking is haram in Islam, and that to a person who drank so immoderately was definitely a kafir as per Islam. So Ghalib wrote, ये मिसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते. Wali as Ali Sardar Zafari translates it is Rishi or Muni. Many people have translated it as a prophet or as a shir, a sage. So ye misaile tasawwuf, ye tera bayan ghalib, these religious paradoxes, these philosophical ponderings, we could have thought you as a sage had you not been a drunkard, is one of my favorite. इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई. इब्न मरियम, son of Mary means Jesus. Ibn Maryam हुआ करे कोई, because Jesus was, it is largely believed that Jesus was a powerful healer. He cured blind people, he raised dead from the graves. He fed hungry people on his way. So Ibn Maryam hua kare koi, mere dukh ki dawa kare koi. And no wonder Ghalib had a terrible life. All his sons died. His father died when he was 6 or 7 years of age. He was raised by his maternal uncles and maternal aunts. He couldn't earn a living for himself. Even he borrowed for his drinks heavily. So he lived a life of penury, and he couldn't get the comfort of life that he always desired. Hazrate Nase Garave Didao Dil Farsura. Hazrate Nase. Hazrat यहाँ पे एक I believe एक sarcasm है. Hazrate Nase Garave means if the prophet would come, Hazrate Nase Garave Didao Dil Farsura. कोई मुझको भी तो समझा दो कि समझाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या. बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशा ए-अहल करम देखते हैं, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं. खयाबा इरम देखते हैं. इरम इज़ स्वर्ग और heaven. So बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब. So you see, this I have organized thematically centered on these words, Nase, Wali, Hazrat, Fakir. एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे. एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक. Sulema, औरंगे सुलेमा, the sword of Lord King Sulema. एक खेल है, okay, it's a child's play. औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, which means Ghalib is disparaging औरंगे सुलेमा or is critical of sword. But एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे.
एजाज मसीहा, which means Jesus raised those the raising of the dead, Lazarus. Jesus, raised Lazarus from the grave. So एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे, गर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं सही, गर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं सही, ये जुनून इश्क के अंदाज छूट जावेंगे क्या. Which means if the nase, the preacher, would have captured me, had I then even forgotten the expressions of love, ये जुनून इश्क के अंदाज छूट जावेंगे क्या. ये कहाँ की दोस्ती के बने हैं दोस्त नासे, अगेन नासे, ये कहाँ की दोस्ती के बने हैं दोस्त नासे, कोई चारगार होता, कोई गमगुसार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता. सो ये कहाँ की दोस्ती, what kind of friendship is this where friends have turned preachers. कोई चारगार होता, someone could have been a healer, someone could have been a confessor, someone could have been a confider. So this kind of longing, preoccupied Ghalib for the rest of his life. It has been, I don't know how properly to draw a parallel between Plato and Ghalib, but one striking parallel that immediately comes to my mind is, it has been said of Plato that all the history of Western philosophy is nothing but a series of footnotes to Plato by A.N. Whitehead. I believe the same thing can be said of Mirza Ghalib as well. Have we progressed much beyond Ghalib when it comes to Urdu poetry? I think not. All the Urdu poetry originated from Ghalib. Of course, I know मीर, रेखते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था. But it was Ghalib that took Urdu poetry to its pinnacle. And since then, I don't know we have progressed much beyond Ghalib or not. That is for us to discuss and debate. You see, there can be some striking parallels of metaphors between Shakespeare and Mirza Ghalib as well. As I said, Mirza Ghalib's quests were existential in nature. Shakespeare says all the world is stage and all the men and women are merely players. They have their entrances and their exits. Mirza Ghalib says, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल, बच्चों के खेलने का मैदान. The world is like a child's playground in front of me. बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे. मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे. बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे. So there's a very striking parallel between Shakespeare's All the World a Stage and Mirza Ghalib's Bazi chahe atfal, the world is like a child's playground in front of me. Ghalib was also concerned with leisure or fursat, not solitude but fursat. And of course it was made famous by गुलजार्स मौसम, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए, संग बाय भूपिंदर, स्टारिंग संजीव कुमार पार्डन, जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर. सो दिस इज़ मेरा एक पसंदीदा शेर है उसी गज़ल से. सो अर्ज़ किया है, दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, पिंडार का सनम कदे वीरां किए हुए. तवाफ़ कुए मलामत, which means taking rounds of the streets of the beloved. Tawaf kuए malamat, taking rounds of the streets of beloved. Pindar means ego. Sanam kada means a temple where an icon or a deity is stored. Veera means something that is destroyed, something that is abandoned, something that is deserted. दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, पिंडार का सनम कदे वीरां किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत. इस शेर को मैं ज़रा दूसरे तरीके से पढ़ना पसंद करूँगा. I have learned it from Zia Moeddin of Pakistan.
दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए. Another parallel that comes to my mind is Ghalib was a poet of contemplation of existence. So existentialism has three concerns: that why is there anything rather than nothing? Why is there anything rather than nothing? It is your existence that precedes your essence. And then I have to find my own meaning. I am a free agent in this meaningless world and I have to find my own meaning. So if I talk of the metaphysics of Mirza Ghalib's poetry, as stated by Ahmad, so the metaphysics of Urdu poetry and of Ghalib in particular can be approached in terms of three questions. What is the nature of the universe and man's place in it? What is God? What is love? There is no question of clarifying man's place in the universe without first contemplating the nature of God and of love. Similarly, there can be no poetry of love unless love is understood first as a human reflection of a divine possibility, and second as a definition of man's place in his moral universe. Ghalib does not offer a celebration of love or longing or ecstasy as mystique poets do, except in some places. Rather, it is a poetry of contemplation, making subtle and, if possible, precise distinctions between one's experience and another and various shades of love. And no wonder when it comes to describing existentialism, Mirza Ghalib says, "न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता. न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता. डुबोया मुझको होने में, you have drowned me in existence. डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता. हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है. वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता." In order to drew his pension and to settle his pension's assignment, Ghalib traveled from Delhi to Calcutta in close to 18 months. और ये सफ़र मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र था. No wonder he was very much surprised and delighted by the city of Calcutta, by the Western rationalism. Azaz Ahmad again notes, and I quote, "The fact is also that Ghalib, like many other Indians of the time, admired British and therefore Western rationalism as expressed in constitutional law, city planning and more. His trip to Calcutta, that is from 1828 to 1829, had done much to convince him of the immediate values of Western pragmatism. The immensely curious and human mind from the narrow streets of a decaying Delhi had suddenly been flung into a broad, well-planned avenues of 1828 Calcutta. From the aging Mughal capital to the new, prosperous and clean capital of the rising British power. In Calcutta, he saw cleanliness, good city planning, prosperity. He was fascinated by the quality of the Western mind, which was rational and could conceive of constitutional governance, republicanism, skepticism. So the Western mind was attractive particularly to one who, although fully imbued with his feudal and Muslim background, was also attracted to a wider intelligence like the one that Western scientific thought offered." And no wonder Ghalib was mesmerized by Calcutta. And Calcutta, as I believe, I have always been fascinated by the city of joy. And no wonder Ghalib also considered it as a city of joy. And no wonder Ghalib mentions that, "कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय. कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय. वो सब्ज़ा ज़ार हाय मुतर्रा के है गज़ब. वो सब्ज़ा ज़ार हाय मुतर्रा के है गज़ब. वो नाज़नी बूतान खुदारा के हाय हाय. सब्र आज़मा वो उनकी निगाहें के हफ़ नज़र. सब्र आज़मा वो उनकी निगाहें के हफ़ नज़र. ताकत रुबा वो उनका इशारा.
कि हाय हाय। सो जब गोरे शहर में घुस गए, दाखिल हो गए दिल्ली में, तो they arrested Ghalib and they captured Ghalib and they took Ghalib in order to be produced in the court of law. रास्ते में पूछा, and this was recited by Kafi Azmi from the letters of Mirza Ghalib, कि तुम मुसलमान हो? गालिब ने कहा कि आधा मुसलमान। तो अंग्रेज़ों ने पूछा आधा मुसलमान कैसा? उन्होंने बोला शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता। ये मिसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न वादा खार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। So I asked at Facebook, at one of my Facebook posts of mine, that what is your favorite sher of Mirza Ghalib? And no wonder, seldom if ever Facebook posts elicit such beautiful responses. And I would like to quote all the responses that I got at Facebook. So one of the friends commented, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ बात के चुप हूँ, है कुछ बात के चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। दर्द से फुगर हुआ गालिब तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मेरी किस्मत में गम घर इतना था, मेरी किस्मत में गम घर इतना था, दिल भी अरब कई दिए होते। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत, और ये शेर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कहना पसंद करूँगा। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत, कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। एंड यू सी ऑल दीज आर फेसबुक रिस्पॉन्सेज दैट आई एम रीडिंग आउट टू यू। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे ना कहानी और है। एंड मर्ग एंड मौत एंड डेथ was also one of the theme that preoccupied Ghalib for the rest of his life. था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, one of my favorites. था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, there was an obstruction of death in my life. था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। रही है अब ऐसी जगह, one of my favorite ones and sung by one of the favorite renditions of mine is by Suresh Wadekar, and the music is given by none other than Ustad Amjad Ali Khan. Beautiful beautiful rendition. मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूँगा, आप सब ज़रूर सुनना इसे। रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पासवा कोई न हो। पड़ी अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई न हो, और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई मातम मनाने वाला भी न हो। उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, the green mosses are coming from the walls. उग रहा है दरो दीवार से सब्ज गालिब, हम बियाबां में हैं और घर में बाहर आई है। आई एम इन डेजर्ट एंड माई होम इज़ इन स्प्रिंग। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आयरनी। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज गालिब, हम बियाबां में हैं और घर में बाहर आई है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब वॉज नो वंडर एन एग्नोस्टिक। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जाम सफ़ाल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख़याल अच्छा है। बाजी चयत फाल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बच्चों के खेलने का मैदान है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज़ तमाशा मेरे आगे। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये न थी हमारी किस्मत, माई यंगर ब्रदर्स फेवरेट, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। ये कहाँ की दोस्ती के बने हैं दोस्त नासे, अगेन द वर्ड नासे। ये कहाँ की दोस्ती के बने हैं दोस्त नासे, कोई चारागार होता, कोई गम गुसार होता। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। अर्ज़ किया है फिर से, इश्क से तबीयत ने जिस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। Again from the same letters of Mirza Ghalib, when it was recited and introduced to you, introduced to me by Kafi Azmi. दिल्ली की हस्ती उनासिब कई हंगामों पे। Remember Ghalib was a poet of contemplation, nostalgia, wistfulness. दिल्ली की हस्ती उनासिब कई हंगामों पे है, कला चांदनी चौक, हर रोज़ मजमा जामा मस्जिद का, हर हफ्ते सैर यमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। ये पांचों बातें अब नहीं, फिर कहो वो दिल्ली कहाँ। 50 बरस आलम रंगबू की सैर की, तरह तरह के मामूलाते महरो मोहब्बत दरपेश आए। बाकी ये कूचा छूट गया, इस फ़न से मैं बेगाने महज हो गया हूँ, मगर अब भी कभी कभी वो अदाएं याद आती हैं। घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, बहरगर बहर न होता तो बियाबां होता। बहर मीन्स समुद्र, सी। If sea would not have been a sea, then it would have been a desert. घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, बहरगर बहर न होता तो बियाबां होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, बेहिस मीन्स stunned, astonished, senseless, numb, तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता। Also, it is important for me to clarify what Azaz Ahmad says about the Urdu poetics, Persian, Ghazal and Nazm. As we have already said, he writes, the main body of Urdu poetics has been borrowed from the Persian. At the center of these poetics is the form of the ghazal, the basic poetic form in Urdu from the beginnings of the language to the middle of this century. The ghazal is a poem made up of couplets, sher. Each couplet wholly independent of any other in meaning and complete in itself as a unit of thought, emotions and communication. No two couplets have to be related to each other in any way whatever except formally. One may be about love, the other way may be about something else, about the coming of the season, something other about politics, the next about spring, and yet they can be the part of a single poem. The only link in this term of prosodic structure is the structure in the rhymes. All the lines in a ghazal have to have of equal metrical length. The first is a rhymed couplet, and the second line of each succeeding couplet must rhyme with the opening couplet. I'll show you an example. The unit of rhyme repeated at the end of each couplet may be as short as a single syllable or as long as a phrase of half a line. The convention is that a ghazal should have at least 5 couplets. Otherwise, it is considered a fragment and there is no maximum length, is what Azaz Ahmad says in the introduction. है बस कि हर एक उनके इशारे में निशां और कहते हैं मोहब्बत, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है वो माँ और
यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। सो यू सी, गुमा और ज़बां और, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां और। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, सुखनवर पोइट्स, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। सो यू सी, गुमा और, मुझको जवां और, जाकर दिलों जां और, अंदाज़ बयां और is a part of a larger poem, and this contains 11 couplets. So a poem should at least have 5 couplets, and the last line of each couplet should rhyme with each other, as I have shown. This poem is especially poignant, and Nasruddin Shah acting and the rendition of this is breathtakingly astonishing. Trust me, you have to watch Gulzar's Mirza Ghalib and the performance of Nasruddin Shah to get a glimpse of it. I cannot do justice to it by reciting it. Still, I would like to recite it. Please pardon my Urdu pronunciation. So this was recited. The scene is that Nasruddin Shah came after a long journey from Calcutta or somewhere, and he asks his wife that, where is my 7th son? Because his wife was expecting when he was outside. So he thought that now he must have been of 18 or 20 months old. So his wife said that he is lying there, pointing towards a graveyard. And then at this grave, Nasruddin Shah utters these words: लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब, क़यामत का है गोया कोई दिन और। तुम माह शबे चार दहुम थे मेरे घर के, तुम माह शबे चार दहुम थे मेरे घर के, तुम मेरे घर के 14वीं के चांद थे, तुम माह शबे चार दहुम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। So guys, that is all in this video. I hope you have enjoyed this. Please do tell me, have I missed on some of your favorite couplets? I'm sure I have missed out on many favorite couplets of yours. Please comment in the comment section and do let me know your favorite couplets. If you have still not liked, shared and subscribed my YouTube channel, arguably the Reading Quest, please do that. Happy reading. Thank you.